Hello viewers, today I am going to discuss periodicity of atomic properties. First property is shielding effect or a screening effect denoted by sigma, and effective nuclear charge Z effective. अगर if this is an atom nucleus, electrons of inner orbit and electrons of outermost orbit may be valence electron. तो अगर ये इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन जब इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एकदम फेस टू फेस है, इसलिए टोटल न्यूक्लियर चार्ज इज इफेक्टिव ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिट. बट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर ऑर्बिट, ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड and becomes ineffective on the valence electron of the atom. This phenomenon is called shielding or screening effect. The presence of inner or the other electrons in the atom, a part of nuclear charge becomes ineffective on the electrons of outermost orbit or valence electron. This phenomenon is called shielding or screening effect. In another way, due to a shielding effect of other electrons in the atom, only a part of nuclear charge is effective on its valence electron, which is called effective nuclear charge or Z effective. So Z effective is equal to total nuclear charge minus shielding effect sigma. अब इस सिग्मा के कई कंसेप्ट दिए गए हैं. फर्स्ट, फॉर electrons of same orbit, shielding effect in the s orbital greater than p than d than f. दूसरा कंसेप्ट है स्लेटर रूल फॉर shielding effect. तो पहले कह रहे हैं स्लेटर साहब कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाहर कोई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में ही आएगा. इस कारण से उनका shielding इफेक्ट जीरो लिया जाएगा. द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी आउटर ऑर्बिट रिलेटिव टू ऑर्बिट अंडर कंसीडरेशन इज जीरो. सेकंड, द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन, अदर इलेक्ट्रॉन shielding करेगा, वो इटसेल्फ shielding नहीं कराता. फॉर द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन इज जीरो, and for other electrons of the same orbit it is 0.35. Value of sigma for the electrons of penultimate orbit n-1 is 0.85 each, and value of shielding effect for rest electrons of the electrons of rest inner orbits is 1 each. One more thing, when d or f subcell, electron of d or f subcell is under consideration, shielding effect for electrons in all underlying subcells is 1. यहाँ पेनल्टीमेट का कुछ नहीं है. The value of sigma for 1s electron for other 1s electron is 0.3. इसको कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं. बेरिलियम 1s2 2s2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 और पेनल्टीमेट फॉर 1s2 पेनल्टीमेट ऑर्बिट 2 into 0.85 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक 0 होगा, एक का 0.35, 2.05 and Z effective is 1.95. Magnesium 1s2 rest inner orbit, 2s2 2p6 penultimate orbit and 3s2 outermost orbit. So for 1s2 2s2 into 1, for penultimate orbit 2s2 2p6 8 into 0.85 and outermost orbit एक का 0 बाकी एक का 0.35. So sigma 9.15 and Z effective 12 minus 9.15 2.28. Chlorine 1s2 inner orbit, 2s2 2p6 penultimate orbit, 2 and 3s2 3p5 outermost orbit. So for 1s2 2 into 1, 2 for 2s2 2p6 8 into 0.85 and for outermost orbit 3s2 3p5 7 इलेक्ट्रॉन में से एक का 0 बाकी 3 6 का 62.35.
सिग्मा 10.9, जेड इफेक्टिव 17 माइनस 10.9 और 6.1। कैल्शियम 1s2 2s2 2p6 ये इनर ऑर्बिट में आ जाएगा, 3s2 3p6 पेनल्टीमेटर हुआ, 4s2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ। तो इनर ऑर्बिट के 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 1, पेनल्टीमेट 3s2 3p6 के लिए 8 into 0.85 एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 1 के लिए 1 into 0.35। ये जेड इफेक्टिव। अब आप देख रहे हो आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में 3d6 एंड 4s2। तो फिर 4s इलेक्ट्रॉन इज अंडर कंसीडरेशन, 3s2 3p6 3d6 are penultimate orbit and rest are inner orbit। तो rest inner orbit के 10 into 1, पेनल्टीमेट के 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 14 into 0.85 और आउटर मोस्ट ऑर्बिट दो में से एक 0 1 के लिए 0.35। ये सिग्मा हो गया और ये जेड इफेक्टिव। When 3d electrons are considered under consideration, so electrons of all underlying subshell 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 has shielding effect 1, मतलब 18 into 1। और ये 3d6 के एक इलेक्ट्रॉन का 0, बाकी 5 का 5 into 3 5, सिग्मा 19.75 और जेड इफेक्टिव 6.25। तो अब इसको समराइज कर रहा हूं। जेड इफेक्टिव इन एटम arises due to electrons having sigma less than 1. They are electrons of outer 2 orbits. So Z effective in atom arises due to electrons of outer 2 orbits having sigma less than 1. So greater number of electrons in outer 2 orbits results greater value of Z effective. In a period, electrons are added to outermost orbit और D block में penultimate orbit. The number of electrons in outer 2 orbit increase करेगा left to right, जिसे Z effective increase करेगा। तो ग्रुप की बात, for first member of group of S and P block, बेरिलियम जिसे ग्रुप 2 का है, इसके पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसका सेकंड मेंबर है मैग्नीशियम, जिसके पेनल्टीमेट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द हैज only 2 electrons in penultimate orbit, so it has lower value of Z effective in other members of the group. Last member of the group has 14 F electrons in F subshell of anti-penultimate orbit, having poor shielding effect. So Z effective or last of the group is maximum. In group of S block of element, other member has same number of electrons in outer 2 orbits, so they have same value of Z effective, like magnesium and calcium। आप देख रहे हो दोनों का Z effective सेम है। In a P block of element, first less than second, तो ठीक है। Now consider compare aluminium and gallium। एल्यूमिनियम सेकंड मेंबर के पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और गैलियम थर्ड मेंबर के पेनल्टीमेट ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, थर्ड और फोर्थ दोनों के 18 इलेक्ट्रॉन है। तो Z in a P block of element, Z effective and third and fourth member are equal but greater than second member because presence of extra 10 D electrons in penultimate orbit। इसलिए ट्रेंड बन रहा है फर्स्ट मेंबर लेस देन सेकंड मेंबर, सेकंड नंबर लेस देन थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वल है और लास्ट का ज्यादा ड्यू टू 14 एस इलेक्ट्रॉन। सिमिलर ग्रुप में फर्स्ट 2 मेंबर का सेम होगा और लास्ट मेंबर का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा 14 एफ इलेक्ट्रॉन इन इनर ऑर्बिट हैविंग पुअर shielding। इन जनरल कंसीडरेशन, सिंपल कंसीडरेशन के लिए जेड इफेक्टिव फॉर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कंसीडर्ड टू बी ऑलमोस्ट इक्वल। Second property, atomic radius. The distance between nucleus and electrons of outermost orbit of the atom is called atomic radius। क्योंकि एटम के सेंटर के रूप में न्यूक्लियस है और सरकमफेरेंस के रूप में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outermost orbit है। Electrons in atom are in form of diffuse negative charge cloud, कोई हार्ड स्फीयर नहीं बना रहा है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट पॉसिबल। इनडायरेक्टली एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड एज फॉलोज। First, covalent radius. Half of internuclear distance between two same atoms
linked by a single covalent bond is called covalent radius. A linked by a single covalent bond, यहाँ फिगर में इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टू डिफरेंट एटम लिंक्ड बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड DAB, AB के बीच ये कोवेलेंट रेडियस ऑफ A प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 डेल्टा X, which is electronegativity difference. This relation can be modified and more accurate as DAB equal to RA plus RB minus delta X का whole square. It means that electronegativity difference आने से internuclear distance becomes less than sum of covalent radius of two bond forming atom. तो bond length decrease करेगा और bond distance बढ़ेगा. van der Waals radius. In solid state, half of internuclear distance between two same atoms, identical atoms, and non-bonded, two non-bonded same atoms के बीच का half of internuclear distance called the van der Waals radius. तो कोवेलेंट रेडियस के रूप में आप बॉन्डेड एटम ले रहे हैं, यहाँ नॉन बॉन्डेड एटम ले रहे हैं, इसलिए van der Waals radius is always greater than covalent radius. Metallic radius, half of internuclear distance between two closest atom in a metallic solid with coordination number 12 is called metallic radius. For an atom, covalent radius less than metallic radius less than van der Waals radius. Ionic radius can be defined as distance between nucleus and the point up to which nucleus exerts its influence on electron cloud. Factors affecting atomic radius. Greater value of Z effective is responsible for a stronger nuclear force of attraction on electrons of outermost orbit and a smaller atomic radius. A stronger nuclear force होगा, distance कम हो जाएगा. Outermost orbit number. Increase in outermost orbit number means addition of an extra orbit. So atomic radius increases with increase in outermost orbit number. Oxidation number for the atoms of same element. Atomic radius decreases with increase in oxidation number. H minus 1, 0 and plus 1. Atomic radius decreases उसी तरह I minus I and plus 1. This means a very useful information. Radius of anion is greater than its neutral atom and radius of cation is smaller than its neutral atom. Periodicity of atomic radius. For atoms of a period, outermost orbit number are same and Z effective increases with increase in atomic number. As a result, this atomic radius should decrease in a period with increase in atomic number. कुछ केसेस में आपको कुछ जगह दिखा देता है कि नोबल गैस का रेडियस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट वो तब होगा जब नोबल गैस का van der Waals रेडियस लिया जाएगा फॉर कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियस. ऐसे नोबल गैस का रेडियस में जो डिक्रीज है वो कम का होता है, क्योंकि वो p6 कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिट कंप्लीट होने के बाद इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा इंक्रीज करता है, इसलिए रेडियस थोड़ा बढ़ेगा, इसे डिक्रीज कम का होगा. फॉर एटम्स ऑफ ए ग्रुप, Z effective are considered to be almost equal and an outermost orbit number increases with increase in atomic number, so atomic radius will increase with increase in atomic number from top to bottom. Last member of the group मैं आपने just डिस्कस किया था कि has greater value of Z effective due to presence of 14F electrons in inner orbit, which results decrease in atomic radius, and the last two member, the atomic radius of last two members becomes almost equal. This phenomenon is called length and wide contraction. Radius of isoelectronics. Atom and ions having same number of electrons and different number of protons are called isoelectronics. So for isoelectronics, electronic configuration same होगा, outermost orbit number same होगा, लेकिन shielding effect same होगा. इस कारण से Z बढ़ने से Z इफेक्टिव बढ़ेगा और Z इफेक्टिव का इंक्रीज से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा.
तो जैसे जैसे एटॉमिक बढ़ रहा है, डिजॉल्व और आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है। दो एग्जाम्पल। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon and also share with your friends